अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, घर बार भी ठीक होगा, कारोबार भी ठीक चल रहा होगा। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक मौजू लेके आया हूँ। आज मेरा मौजू है कि बिन मांगे खिदमत। दोस्तों, मैं अपनी बात एक वाक़या से शुरू करता हूँ। एक नौजवान शख्स एक आलिम दीन के पास शिकायत लेके आया कि मेरे वालिदैन वो डेढ़ उम्र हो चुके हैं, यानी कि वो बूढ़े हो चुके हैं। वो अक्सर बेशतर मुझसे खफा रहते हैं, हालांकि मैं उनकी हर वो ख्वाहिश पूरी करता हूँ, उनको हर वो चीज़ मुहैया करता हूँ जिसका वो मुतालबा करते हैं। आलिम दीन ने नौजवान शख्स को सर से पाँव पैरों तक देखा और फरमाने लगे, बेटा, यही तो इनकी नाराज़गी की वजह है, खफा होने की वजह है कि तुम उनको हर वो चीज़ देते हो जो वो मांगते हैं। नौजवान परेशान हुआ और उस बुजुर्ग की बात ना समझ पाया। वो कहने लगा, या अल्लाह के बंदे, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, इसकी वजाहत कर दें। आलिम दीन फरमाने लगे, बेटा, क्या तुमने कभी गौर किया है, जब तुम दुनिया में नहीं आए थे तो तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे वालिदैन ने हर वो चीज़ तैयार कर रखी थी जिसकी तुम्हें ज़रूरत थी। तुम्हारे लिए कपड़े, तुम्हारी खुराक का इंतज़ाम, तुम्हारे रहने सहने का इंतज़ाम, तुम्हें सर्दी न लगे सर्दी का इंतज़ाम, तुम्हें गर्मी अगर गर्मी है तो गर्मी ना लगे गर्मी का इंतज़ाम, तुम्हारे आराम का बंदोबस्त, यहाँ तक कि तुम्हारी क़ज़ाए हाजत तक का इंतज़ाम कर रखा था। फिर आगे चले, क्या तुम्हारे वालिदैन ने कभी तुमसे ये पूछा था कि बेटा, तुमको ये चीज़ खिलाएं या ना खिलाएं? बेटा, तुमको स्कूल में दाखिल कराएं या ना कराएं? क्या तुम्हारे वालिदैन ने कभी तुमसे पूछा था कि बेटा, तुम कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए तैयार हो या नहीं, या तुम्हें कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिल कराएं या ना कराएं? नहीं ना, बल्कि तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए तुमसे पहले ही स्कूल की ट्रांसपोर्ट के लिए, तुम्हारे यूनिफॉर्म के लिए तुम्हारे वालिद साहब ने कभी तुमसे नहीं पूछा होगा, कभी तुमसे नहीं पूछा होगा, कि बल्कि अपनी इस्तायद के मुताबिक बेहतर से बेहतर हर चीज़ तैयार कर रखी होगी तुम्हारे मांगने से पहले, बल्कि तुम्हें बेहतर से बेहतर हर वो चीज़ मुहैया कर दी और तुमने अभी मांगनी थी, तुम्हारे मांगने से पहले हर वो चीज़ तुम्हें मुहैया कर दी गई। तुमने कभी सोचा है कि तुमने वो चीज़ें मांगी थी और तुम्हारे मांगने पर वो मिली? नहीं, वो तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें दी गई। शायद इसका एहसास ना हो जब तुमने जवानी में कदम रखा था तो तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढना शुरू कर दी। किस लिए? ताकि वो तुम्हारी अच्छी तरह खिदमत कर सके और तुम्हारी देखभाल कर सके, और तुम्हारी बीवी से उन्हें कोई मुफाद नहीं था, वो सिर्फ तुम्हारे लिए उसे ढूंढ रहे थे। और ऐ शख्स, तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारे लिए कपड़े, तुम्हारे स्कूल, तुम्हारा यूनिफॉर्म, तुम्हारे स्कूल की साइकिल, तुम्हारा मोटरसाइकिल, तुम्हारे खिलौने, तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें दिए, वो भी तुम्हारे ना मांगने के बावजूद। क्या तुमने मांगे थे? नहीं। यहाँ के तुम्हारा बोलचाल, तुम्हारी गुफ्तगू का अंदाज, तुम्हारी तबीयत, तुम्हारा रहन सहन, रंग दम, तुम्हारा चाल चलन, पहला तुम्हारा वो लफ्ज़ जो तुमने पहला लफ्ज़ बोला था मुँह से, वो भी तुम्हारे माँ बाप ने तुमको मुफ्त में सिखाया। क्या तुमने मुतालबा किया था इन चीज़ों के लिए, इन अल्फाज के लिए? नहीं, लेकिन तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारे मुतालबे के बगैर तुम्हें दिए, और तुम कहते हो कि मैं वो जो मुतालबा करते हैं मैं उनको वो चीज़ें देता हूँ, और आज तुम कहते हो कि जो कुछ मांगते हैं उनको ला के देता हूँ, इसके बावजूद वो मुझसे खफा रहते हैं। यही तो वजह है कि उनको तुम वो चीज़ें ला के देते हो जो वो मुतालबा करते हैं, और उनके मुतालबे के बगैर कोई चीज़ नहीं देते हो। जाओ, अपने वालिदैन को बिन मांगे देना शुरू कर दो। इन्हीं की ज़रूरियात का ख्याल अपने बच्चों की ज़रूरियात का ख्याल की तरह करो। जैसे तुम अपने बच्चों का ख्याल करते हो, वैसे ही अपने वालिदैन की ज़रूरियात का ख्याल करो।
یہی تو وجہ ہے وہ تم سے خفا رہتے ہیں۔ ان کو اپنا وقت دینا شروع کر دو، ان کی خدمت کرو، گھر کی ذمہ داریاں خود بھر لو، گھر کی ذمہ داریوں کو بوجھ ان سے اٹھا لو۔ جیسے اپنے بچوں کے باپ بنے ہو ویسے ہی اپنے والدین کی نیک اولاد بنو اور ان کو بن مانگنے دینا شروع کر دو۔ کیا کبھی ان کے پاؤں بن بولے دبائے ہیں آپ نے؟ کیا کبھی ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں؟ نہیں نا۔ کیا کبھی ماں باپ کے لیے ہاتھ میں پانی یا تولیہ لیے انتظار کیا ہے، کھڑے ہوئے ہو؟ جیسے وہ تمہارا منہ بچپن میں نیم گرم پانی سے دھوتے تھے۔ کچھ تو کرو صحیح، ان کو بن مانگے لا کر دو، ان کی ذمہ داریاں اٹھا کر تو دیکھو، ان کو وقت دے کر تو دیکھو، ان کی خدمت کر کے دیکھو، وہ تم سے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ وہ کبھی تم سے خفا نہیں ہوں گے، لیکن اپنے والدین کی خدمت بن مانگے خدمت کرنی چاہیے، ان کی ہر وہ ضروریات پوری کرنی چاہیے جس کی انہیں ضرورت ہے، چاہے وہ مانگیں یا نہ مانگیں، چاہے وہ کسی چیز کا مطالبہ کریں یا نہ کریں۔ ہمیں ان کے مانگنے سے پہلے، ان کا مطالبہ کرنے سے پہلے ہر وہ چیز مہیا کرنی چاہیے جس کی زندگی گزارنے کے لیے ضروریات ہیں۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو ہر وہ چیز لا کے دیتے ہیں، حالانکہ جس چیز کا وہ مطالبہ بھی نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہوتا ہے اس کو یہ چیز فلاں چیز کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے ہمارے والدین کو فلاں فلاں چیز کی ضرورت ہے، اور کوشش کریں کہ ان کو اپنا وقت دیں۔ آپ کچھ بھی نہ لا کے دیں گے، اگر آپ ان کو وقت دیں گے، ان سے میٹھی باتیں کریں گے، چند منٹ آپ ان کو دیں گے تو خوش ہو جائیں گے، ان کا سارا وقت، آنے والا وقت اچھی سے ہو جائے گا۔ اگر ہم ان کو ہر وہ چیز لا کے دیں گے جس کی ضرورت ہو، لیکن اگر آپ اپنا وقت نہیں دیں گے تو کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ انسان کیونکہ جب والدین پورے ہو جاتے ہیں تو وہ بچے کی مانند ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم بچے کی دیکھ بھال کرتے ہیں ویسے ہی اپنے والدین کی دیکھ بھال کرنا اپنے خاندان کا فرض ہے۔ اگر ہم اپنے والدین کی دیکھ بھال نہ کر پائے تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا اور اللہ کے عذاب کا پلہ چکنا پڑے گا۔ کوئی انسان نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے عذاب کا پلہ چکوں، لہٰذا ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے اور وہ بھی بن مانگے خدمت کرنی چاہیے۔ امید ہے میری بات آپ لوگوں کے ذہن میں ذہنشین ہوگی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگیں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔